Hello everyone, today I will explain question number 7 of exercise number 1.4. So question is, let a equal to x such that x is a natural number and set b equal to x such that x is an even natural number. Now set c equal to x such that x is an odd natural number and set d equal to x such that x is a prime number. So find part 1 is A intersection B. So first of all, we write all these four sets in roster form because all the given sets are in set builder form. So first of all, we write set A in roster form. So since set A is a set of natural numbers, it means it will start from 1 and will go up to infinite. Therefore set A equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to infinite. Same way set B is the set of even natural number. So set B equal to in curly bracket 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on up to infinite. Now therefore A intersection B equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to infinite intersection in curly bracket 2, 4, 6, 8, 10 and so on up to infinite. So when we will find intersection of A and B, since A is the set of all natural numbers and B is the set of even natural numbers. So since set B contained in set A, therefore intersection will be the set B. That's why intersection B equal to in curly bracket 2, 4, 6, 8, 10 and so on up to infinite, which is equal to set B. Now part 2 is A intersection C. Again we write set A, which is in curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to infinite, and set C equal to, what is set C? Set C is x such that x is an odd natural number. It means x is odd and natural number as well. It means a number which is not completely divisible by 2 is a set of an odd natural numbers. Therefore set C equal to in curly bracket 1, 3, 5, 7, 9 and so on up to infinite. Therefore A intersection C equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to infinite intersection 1, 3, 5, 7, 9 and so on up to infinite. Again we get intersection of A and C is set C because set C contained in set A. So answer will be in curly bracket 1, 3, 5, 7, 9 up to infinite equal to set C. Same way part 3 A intersection D. Again here is the solution. We will copy set A equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to infinite, and set D equal to, what is set D? Set D is x such that x is a prime number. So what is prime number? A number which is divisible by only 1 and itself is known as prime number. So set D equal to in curly bracket 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on up to infinite. Therefore A intersection D equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to infinite intersection in curly bracket 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on up to infinite. Again
since all the prime numbers contained in the set of natural numbers, therefore again we get the intersection of set A and set D is the set D. So answer will be equal to in curly bracket 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on up to infinite equal to set D. Again part 4, B intersection C. So B is the set of even natural numbers, therefore B equal to in curly bracket 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on up to infinite. And C is the set of an odd natural numbers, so equal to in curly bracket C equal to in curly bracket 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on up to infinite. Now we find B intersection C, since both set B and C have no elements in common, so we will get B intersection C as phi, because phi indicates a set which has no elements. So B intersection C equal to phi. Again B intersection D. So here is the solution. B equal to in curly bracket 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on up to infinite. And set D equal to, since D is the set of prime numbers, so D equal to in curly bracket 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on up to infinite. Therefore B intersection D equal to 2, because B is the set of even natural number and D is the set of prime numbers. So 2 is the only common element which is even and prime as well. Now C intersection D, set C equal to in curly bracket 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and so on up to infinite, and set D equal to in curly bracket 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on up to infinite. Therefore C intersection D equal to in curly bracket 1, 3, 5, 7, 11, 17, 19 and so on up to infinite, because set C is the set of odd natural numbers and set D is the set of prime numbers. So here the common elements are 3, 5, 7, 11, 17 and 19. So we can write C intersection D as in curly bracket 3, 5, 7, 11, 17, 19 and so on up to infinite. Now once again in Hindi. क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सेट ए नेचुरल नंबर का सेट है, सेट बी इवन नेचुरल नंबर का सेट है, सेट सी आड नेचुरल नंबर का सेट है और सेट डी प्राइम नंबर्स का सेट है. सो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे. तो सारे सेट किस फॉर्म में दिए हुए हैं? ए दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में. इनको हम कॉपी करेंगे रोस्टर फॉर्म में. सो रोस्टर फॉर्म में ए क्या होगा? इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. और बी का क्या होगा? बी इक्वल टू, चूँकि बी इवन नेचुरल नंबर है तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हों. सो बी में क्या आएगा? बी इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्या आएगा? सेट बी ही आएगा, क्योंकि सेट बी क्या है? इवन नेचुरल नंबर है और ए क्या है? सारे नेचुरल नंबर का सेट है. तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? सेट बी. सेम वे ए इंटरसेक्शन सी. सो ए को कॉपी करेंगे क्योंकि ए क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो ए क्या होगा? इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. और सेट सी क्या है? सेट ऑफ
odd natural numbers. It means a number which is not completely divisible by 2 is known as odd natural number. So set C will be in curly bracket 1, 3, 5, 7, 9 and so on up to infinite. दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो कि सेट C क्या है, सेट A का सबसेट है, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, सेट C. सेम वे A इंटरसेक्शन D. A क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. सेट D क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर. एक्सरसाइज दैट X इज अ प्राइम नंबर्स. सो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो या तो 2 से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो. सॉरी, ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो, प्राइम नंबर कहलाते हैं. इसमें क्या आएगा, D इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. देयरफॉर A इंटरसेक्शन D क्या होगा, क्योंकि D क्या है, A का सबसेट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, सेट D ही आएगा. अगेन B इंटरसेक्शन C. B क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. इट मीन्स B इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on up to infinite. And C equal to, C is the set of odd natural numbers. So set C will be in curly bracket 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on up to infinite. Since there is no common elements, इन दोनों में क्या है, कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा, एम्प्टी सेट. विच और एम्प्टी सेट किसे डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट या नल से डिनोट करते हैं 5 से. तो यहाँ क्या होगा, B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5. अब B इंटरसेक्शन D निकालेंगे. B इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on up to infinite. And set D equal to in curly bracket 2, 3, 5, 7, 11, 13. Therefore B intersection D क्या होगा, एलिमेंट 2, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है. नाउ C इंटरसेक्शन D. C क्या है, ऑड नेचुरल नंबर. सो C इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and so on up to infinite. D equal to in curly bracket D equal to in curly bracket 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on up to infinite. दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, C इंटरसेक्शन D इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 3, 5, 7, 11, 17, 19 and so on up to infinite. Clear? Thank you.